Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. MashaAllah. Welcome back to the live health show, Your Health, coming to you live from Iqra TV studios here in Bradford. Alhamdulillah. Welcome back. Before the break, we were discussing the different types of psoriasis, and I mentioned that psoriasis is a autoimmune disease, which is kind of caused by the malfunction of the T cells in the body and the white cells called neutrophils, and they make your body attack its own skin. And what psoriasis is predominantly characterized by is that it kind of increases the shedding of the skin cells, and in some kind of cases up to 1,000-fold more. So you see a lot of skin being shed, you see raw skin, you see inflammation, you see irritation, and different kind of manifestation of psoriasis. It's a very distressing illness, and alhamdulillah, in homeopathic medicine we have natural remedies, mashallah, which can help. So we'll go through this, then I'll go through the PowerPoint presentation for the effects of the side effects really of fizzy drinks, and how dangerous and how detrimental they are to your health, and how they are kind of causing a whole epidemic in obesity and diabetes and hypertension, and in fact metabolic syndrome. Very, very dangerous. In fact, they even cause fizzy drinks cause kind of shrinkage of your brain. La ilaha illallah. So let's continue with the different types of psoriasis. I mentioned before the break there's 5 types of psoriasis. मैंने अर्ज़ किया था ब्रेक से पहले कि 5 किस्म के psoriasis होते हैं. हमने बताया कि जो सबसे कॉमन है वो प्लाक psoriasis है, फिर इसके बाद गुटेट psoriasis होती है, और इसके बाद इन्वर्स. हमने ये भी अर्ज़ किया था कि जो सबसे कॉमन psoriasis होती है जो पूरे जिस्म पर हावी हो सकती है, और जिस्म के अंदर गोए के लाल लालपन ज़ाहिर होता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ यानी कि ख़ारिश होती है, डेड स्किन का ज़हूर होता है, इसका नाम है प्लाक psoriasis. इसके बाद नंबर 2 सेकंड टाइप ऑफ psoriasis गुटेट psoriasis होती है, और ये छोटे छोटे दाग होते हैं, जिस तरह चिकन पॉक्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे दाग होते हैं. तो ये बच्चों के अंदर, ये बच्चों के लिए यानी बच्चों के अंदर ये काफ़ी ज़ाहिर होता है वगैरह वगैरह. तो गुटेट psoriasis नंबर 2 है, और इसकी वजह भी हम बताए थे कि ये स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है, वो बैक्टीरिया जिस्म पर हावी हो जाता है, और इसकी वजह से ये गुटेट psoriasis का ज़हूर होता है. नंबर 3 इन्वर्स psoriasis. ये जो इन्वर्स psoriasis है, ये जो होती है जिस्म के अंदर, ये जो बाजू होते हैं इनके जो दरमियान जो फ्लेक्सर होते हैं वहाँ ज़हूर उसका होता है. बाज़ मरतबा आदमी के जो घुटने हैं उसके पीछे उसका ज़हूर होता है, बाज़ मरतबा सर के अंदर होता है, और या फिर बाज़ मरतबा रानों के दरमियान इसका ज़हूर होता है. और ये बहुत डिस्ट्रेसिंग इलनेस होती है. अगर आपने कभी नहीं देखी है, और जब अगर आप इसको देखें तो बहुत ही आपको यानी शॉक होगा. द होल बॉडी इज़ कवर्ड विद दीज काइंड ऑफ रेड एंड ग्रे स्केली कंडीशन. इट्स वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग. अच्छा, नंबर 4 चौथी किस्म की जो psoriasis होती है उसको हम कहते हैं पुस्टुलर psoriasis. पुस्टुलर इस वजह से कहते हैं कि लाल लाल जो जिस्म के अंदर जो ज़हूर होता है psoriasis का, उसके ऊपर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, और दाग से ये जो फुस होती है वो उसका ज़हूर होता है. और ये भी बताते जाऊँ कि psoriasis जो है ना, ये इन्फेक्शस नहीं है, आपको किसी से psoriasis लगने का कोई इम्कान नहीं है. It's not infectious. You can't catch it from anybody. हाँ, और 5वीं किस्म की जो psoriasis है उसका नाम है एरिथ्रोडर्मिक psoriasis, और ये बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है ना तो पूरे जिस्म पर लाल लाल सा ज़ाहिर हो जाता है, और काफ़ी तकलीफ़ भी होती है, आदमी को बहुत तकलीफ़ होती है इससे. ये जो 5वीं किस्म है. अब चलते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या हैं psoriasis के. तो सबसे पहली बात ये है कि आदमी के जिस्म पर एक यानी हर जगह स्मॉल पैचेस होंगे जो उभर जाएंगे, जिस्म से ऊपर उभरे होंगे आपको नज़र आएंगे, और उन पर एक सफ़ेद और वाइट किस्म के जाल नज़र आएंगे आपको. यू गेट द स्केली मैनिफेस्टेशन ऑफ psoriasis, और ये छोटी भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. ये पहली बात है. सो द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ psoriasis, you get raised red skin, red patches of raised skin. You'll see this. Number 2, you'll have a lot of dry, cracked skin. That becomes very, very dry, and it bleeds as well. And this can become infected.
दूसरी जो अलामत होती है सराइसिस की वो ये है कि जिस्म के अंदर जो चमड़ी होती है वो बहुत खुश्क हो जाती है और खुश्की की वजह से वो फट जाती है, और जब फट जाती है तो फिर ज़ाहिर बात है उसके अंदर ये जो हमारे आगे पीछे यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आदमी को ज़्यादा खारिश आती है, बहुत आदमी को जलन महसूस होती है, और इसके साथ आदमी को ये जो सोनस होती है आदमी को, यानी एक बहुत किस्म की तकलीफ़ आदमी को महसूस होती है, उलझन आदमी को महसूस होता है। ज़ाहिर बात है जब आदमी के जिस्म खुश्क है और यानी फटा हुआ है तो उलझन तो होगी, तकलीफ़ तो होगी। The fourth symptom of psoriasis is thickened and pitted or ridged nails. बाज़ मरतबा जिन लोगों को ये psoriasis होती है, अगर आप उनके नाखूनों की तरफ देखेंगे ना तो उनके नाखून बहुत मोटे मोटे नज़र आएंगे, बहुत गाढ़े होंगे। जिस तरह किसी को ठिनी इन्फेक्शन होता है या ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है आदमी के बड़े टो पर, तो वो भी गाढ़े हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है psoriasis वालों लोगों को, उनके जो हाथों के जो अंगूठे होते हैं और उनके जो नाखून होते हैं वहाँ इसका ज़हूर होता है। द फिफ्थ सिम्टम इज़ ये जो पाँचवीं यानी कि सिम्टम है psoriasis का, उसको सिर्फ वो ज़ाहिर होता है जिन लोगों को सराइटिक आर्थराइटिस हो। सराइसिस तो जल्दी अमराज है, लेकिन बाज़ मरतबा किसी आदमी को सराइटिक आर्थराइटिस भी हो जाती है कि सराइसिस के साथ उनके जोड़ों पर भी असर नमूदार होता है, उनके जो जोड़ वो सूज जाते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है। एक हमारे दोस्त हैं, उनको भी ये तकलीफ़ है, सराइसिस के साथ उनको आर्थराइटिस भी है। So stiff and swollen joints, you will get this in certain individuals. So this condition extends beyond the skin and it leads to swollen and inflamed joints, and this is known as psoriatic arthritis. Acha. And the fifth, in fact the sixth symptom of psoriasis, especially in children, is that you see small spots. These small scaling spots can appear on any part of the body. Any part of the body it can appear, especially with small children. You'll see this with them, that it'll be like small pen marks, and this is what I mentioned earlier in the beginning of the program, that this is what I saw with my patient who came to see us earlier in this week on Tuesday. Now what makes psoriasis appear? They don't just come out the thin air. There's a reason why people are getting psoriasis, especially young children. Before, it used to be suppression, that a person would suppress their emotions, they wouldn't kind of, say what's on their mind, and they would force themselves to be, they'd suppress their emotions, and this would cause an imbalance which would kind of, physically mess up the T cells and the pneumococcal cells, and that would cause the psoriasis to, it would create the psoriasis, the condition for psoriasis. However, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 different reasons which all have a bearing on psoriasis. बस मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि psoriasis जो है, शुरू में हमने यही देखा था कि psoriasis उन लोगों को होती है जो आपने जज्बात जो हैं, आपने जो इमोशंस होते हैं वो अंदर ही अंदर रखते हैं, उनका उनका इजहार नहीं करते हैं। वेरी सुप्रेसिव पीपल, कोई गुस्सा हो तो वो भी पी लेंगे, कोई बात कहनी हो वो भी नहीं कहेंगे, बहुत खामोश तबीयत, लोगों की बात ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे, और इसकी वजह होती है अगर वो बात कर लें तो फिर और मुसीबत हो जाती है उनके लिए, और गुस्सा उनकी तरफ तवज्जो होता है, तो वो समझते हैं कि बस हम चुप ही रहें, इसके अंदर हमारा फ़ायदा है। लेकिन फ़ायदा तो क्या, उनको ये बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो सप्रेशन जो होती है, सप्रेशन की वजह से ये psoriasis का ज़हूर होता है। तकरीबन 70% जो केसेस होते हैं psoriasis के, यानी कि बड़े लोगों के अंदर, शादीशुदा लोगों के अंदर, जवानों के अंदर, वो इस सप्रेशन की वजह से होता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी वजूहात हैं, तो हम उसकी तरफ इशारा करते हैं। नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर्स। अगर किसी को आपने फैमिली के अंदर किसी और को psoriasis है तो उसको भी लगने का इम्कान जो है बढ़ जाता है। नंबर 2, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। अगर किसी का इम्यून सिस्टम यानी ओवर एक्टिव हो तो उनके वाइट सेल जो होते हैं, जिसे हमने अर्ज़ की था, और जो यानी कि टी सेल्स और वाइट सेल जिसको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, वो ज़रा ख़राब हो जाते हैं, उनकी ख़राबी की वजह से psoriasis का ज़हूर होता है। Autoimmune disease is actually caused, in this case in psoriasis, by a malfunction of the T cells and the white cells called neutrophils. तीसरी बात, environmental triggers.
انوائرمنٹل ٹریگرز یعنی کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے آدمی کا کوئی کام ہے، کیمیکلز وغیرہ آگے پیچھے آدمی منتقل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری شروع ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہو، میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو اسٹریپٹوکوکل بیکٹیری ہے اس کی وجہ سے بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ اور چھوٹی بات جو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے وہ سٹریس کی وجہ سے، اگر سٹریس ہو تو سٹریس کی وجہ سے پورا سسٹم آدمی کا دفاعی جو امیون سسٹم ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور پھر جو بھی آدمی کو سسپٹیبلٹی ہوتی ہے وہ آدمی کو لگ جاتی ہے۔ Stress impacts the body's immune response, thereby influencing the severity and frequency of the periods of psoriasis. Number 5, infections. اگر کسی کو انفیکشنز ہو، اسپیشلی اسٹریپٹوکوکل فرنجائٹس جو تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، اگر کسی کو یہ انفیکشن ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ آدمی کو ایک قسم کے کٹلس ہو جاتا ہے، یعنی کہ سرائسس کے پکڑنے کے لیے۔ اور آخری بات، لوگوں کو جو کافی موٹے ہوتے ہیں، اوبیس ہوتے ہیں، یا اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں یا ویپنگ زیادہ کرتے ہیں، آن ڈے سے وہ فیزی ڈرنک زیادہ پیتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بیماری کا لگنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے ہومیوپیتھک جو دوائیاں ہوتی ہیں اس کے لیے، تو آپ کے سامنے میں 1 2 3 4 5 6 7 دوائیاں، اور اگر ٹائم ہو تو 3 اور بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک کیس آیا تھا برمنگھم سے، ایک خاتون تھی تو ان کو سرائسس تھی، ان کو سرائسس سر پر تھی، اور ان کی یہ جو ٹانگیں تھی وہاں ان کو بھی یہاں یعنی کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، تو ہم نے ان کو ایک دوائی دی تھی، دوائی کا نام بھی مجھے ابھی یاد ہے، نٹرم یویٹیکم، اس کا تذکرہ یاد نہیں ہے، لیکن ان کا جو کیس تھا وہ اسی دوائی کے مطابق تھا، تو ہم نے ان کو دی یہ دوائی، تو ان کے جو پوری سرائسس تھی جو کتنے سال سے ان کو تھی، 4 ہفتے کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ختم ہو گئی، اور آج تک وہ واپس نہیں آئی۔ تو یہ ہے ہومیوپیتھک دوائی کا اثر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ خیر، نمبر 1 دوائی جو ہے سورائسس کے لیے ہومیوپیتھی کے اندر، آرسینکم البم۔ آرسینکم البم ایسی دوائی ہے کہ اگر کسی کو سورائسس ہو، جون سے بھی ہو ان 5 قسموں میں سے، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے جب ان کا جسم گرم ہو، تو گرمی کے وقت ان کو آرام ہوتا ہے، خارش اور انفلیمیشن کم ہوتی جاتی ہے، اور ٹھنڈی کے اندر ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج کل جو آٹم ونٹر ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کی سرائسس بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، جن کو سرائسس ہوتی ہے ان کے وٹامن ڈی لیول بھی بہت کم ہوتے ہیں، تو ان کو وٹامن ڈی جو ہے نا، وہ جو ہکس D3 ہوتا ہے، یا اپنے جی پی سے وہ جو 2 لاکھ یا 4 لاکھ والا کیا کہتے ہیں اس کو، کیلسی کیفرول انجیکشن لگانا چاہیے۔ تو اس کا بہت بڑا تعلق ہے جسم کے صحت کے ساتھ۔ وٹامن ڈی کی کمی، اگر وٹامن ڈی کی کمی کسی کے اندر ہو، اور اکثر لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، اسپیشلی ایشینز، چاہیے جو گورے کوکیشنز ہوتے ہیں ان کو تو ہی ہے، ہمارے لوگ کے اندر تو بہت زیادہ ہے۔ تو جو سی بھی بیماری ہو، اگر جلدی بیماری ہو، چاہے سرائسس ہے، چاہے ایگزیما ہے، چاہے اٹوپک ڈرمیٹائٹس ہے، جو کچھ بھی ہو، وٹامن ڈی کا اثر اس کے ساتھ بہت وابستہ ہے۔ وٹامن ڈی آپ بڑھائیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو جسم کی جو صحت ہے اس کے اندر بھی آپ بڑھوتری دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آرسینکم البم is a good remedy for people who experience dry, scaly, itchy skin. So this is what psoriasis is, very scaly. You'll see the scales falling off. So when they come to the consulting room, unfortunately, when they leave, the whole floor is covered with these scales. You will see this. This is how much shedding they are doing of these of their skin cells. May Allah Ta'ala help everybody with psoriasis. So this remedy is good for people who've got dry, scaly, itchy skin that feels better with warmth. It's prescribed for skin inflammation that worsens during the night and it gets worse in cold weather. تو اگر کسی کو یہ تکلیف ہو کہ ان کی سرائسس رات کے وقت ان کی خارج بڑھ جاتی ہے، اور دن کے اندر اور کم ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈے موسم کے اندر ان کو یہ سرائسس بڑھ جاتی ہے، تو یہ جو آرسینکم البم بہت اچھی ان کو فائدہ دے گی۔ اور ساتھ ساتھ ایسے اگر وہ لوگ ہوں جو بہت OCD ہیں، obsessive compulsive disorder کے شکار ہیں، صفائی پسند ہے، ہر چیز ان کے لیے بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، کافی ان کے اندر ایک قسم کی اریٹیشن ہوتی ہے، تو اس سے بھی یہ دوائی ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2 دعا جس کو ہم کہتے ہیں گرافیٹس، یہ جو دوائی ہے
ये बहुत ही अच्छी है जिस्म के जल्दी अमराज के लिए, चाहे सराइसिस हो चाहे एक्जिमा हो. Graphites is a very good remedy for skin illnesses. I use it frequently for eczema. So graphites is recommended for those with thick, rough skin lesions. They have thick and rough skin lesions, and also these people are quite constipated. They're quite obese, they're quite constipated, and they have very, very thick skin. And also their psoriasis is found on the scalp, behind the ears, and also on the knees and the elbows. ये जो दवाई है ग्राफिटीज़, ये उन लोगों के लिए होती है जिनका ये जो साइसिस है अक्सर हिस्सा उनका आदमी यानी उनके घुटनों पर होता है या उनके कैनियों पर होता है, एल्बोज या नीज पर होता है, और उनके कानों के पीछे होता है, और उनके जो स्किन है, जिल्द है, वो काफ़ी मोटी मोटी नज़र आती है, और साथ साथ इन लोगों को कब्ज़ की तकलीफ़ भी होती है और काफ़ी ये ओबीस होते हैं. अगर किसी को ये यानी सिम्टम्स पाए जाते हो और उनको सोराइसिस भी है तो ये ग्राफिटीज़ उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी. और ये जो दवाई होती है मैं जो देता हूँ इसके अंदर ये जो डोज में देता हूँ वो 30C सुबह शामी 4 हफ्ते के लिए. तो अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आप ज़रूर ये आजमा लें अपने जीपी के हिदायत के सामने, उनको बताएं कि आप ये दवाई ले रहे हैं. वैसे तो होम्योपैथी के अंदर कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन इसको टू लेट योर जीपीज़ नो. The third remedy is known as sulfur, and sulfur I've mentioned before is a centrifugal remedy. You have to give it very, very carefully because it can bring things out. It's a centrifugal force that it exerts on the human organism. Sulfur is very good for fiery, red, inflamed lesions that are itchy and burning. You'll see the people who need this remedy, their lips will be very red, their orifices will be very, very red, and they'll be very fiery people, very, very confident people, speaking their mind, they're not shy. So if somebody like this has psoriasis, then this remedy sulfur can be very, very good, but take it very, very carefully because it can bring things out, and that isn't something that everybody can deal with. That's why it's always good to see a registered professional naturopathic or homeopathic physician and have your case taken properly and be under professional guidance. The fourth remedy, which is very good for psoriasis, is known as rust tox. This remedy I just gave yesterday to somebody, actually, to 2 people with psoriasis. Rust tox is very good. Rust tox, as I mentioned before, is a remedy which we call the iron rustige, in the sense that a rustige, when you open it initially, it's very rusty, it's very difficult to open, you have to use a lot of effort, and then it opens up. But if you keep opening it, then it becomes a lot easier to open and close. Like somebody who's got psoriasis in the morning, or they've got arthritis in the morning, it's very difficult for them to limber up. It takes some time, maybe 10-15 minutes before they limber up and they warm up and the pain goes. So this rust tox is amazing in the sense that it has in its symptom picture a rash over the body, and if you see somebody with psoriasis, they have a full rash. So that's very, very similar. And number 2, for people with psoriatic arthritis whose joints are affected, obviously rust tox is a major remedy for painful swollen joints which are worse in the morning and get better as the day progresses and as you limber up. So, and then number 3, especially people who are OCD, they're very fastidious, very particular, very, very clean, very orderly, then this remedy ticks that box as well. So if you've got all these symptoms in a person, somebody who's got psoriatic arthritis, his joints are inflamed, he's very OCD, this remedy can cure him by the grace of Allah. Rust tox. Suitable for chronic skin conditions that improve with motion but worsens in cold, damp weather or when you're resting. If it kind of seizes up, it can be used for people with joint pain due to psoriatic arthritis. ये जो दवाई ना rust tox, ये बहुत अच्छी दवाई है उन लोगों के लिए जिनको psoriasis के साथ arthritis भी हो. यानी सुबह के वक्त उनको जब उठते हैं बिस्तर से तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, उनको अपना कमर सीधे नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह यानी चल नहीं सकते हैं दुख दर्द के बग़ैर. लेकिन 15-20 आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा चलने के बाद वो उनके जो दुख होते हैं वो बहुत हल्का पड़ जाते हैं. तो अगर उनको ये तकलीफ़ है
साइसिस है और ये फिर जॉइंट भी उनके मुतासर हैं, तो उनके लिए ये जो रोस्टॉक्स है बहुत अच्छी है। और इसका डोज ज़रा अलग है, औरों का तो 30 सी आपको लेना है, लेकिन ये जो है ना रोस्टॉक्स वो 12x पोटेंसी के अंदर, 12x, और वो भी 3 मरतबा दिन के अंदर। रोस्टॉक्स 12x 3 मरतबा दिन के अंदर 4 हफ्ते के लिए। इसके बाद आप बढ़ा सकते हैं 1M तक आप जा सकते हैं 3 मरतबा हफ्ते के अंदर। मैंने कल ही ये दवाई किसी को दी थी और उनको फिर मैं विटामिन डी का टीका भी मैंने दिया था ताकि दे गो टुगेदर। तो ये हो गया रोस्टॉक्स। 5वीं दवाई पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ना ये बहुत अच्छी दवाई है एक्जिमा के लिए और सराइसिस के लिए। और पेट्रोलियम जो है ना ये पाई जाती है काफ़ी चीज़ों के अंदर, आपकी जो विक्स है उसके अंदर भी पेट्रोलियम पाई जाती है, वसलीन के अंदर भी पेट्रोलियम पाई जाती है। तो जो चीज़ के अंदर सलाहियत है यानी बीमारी पैदा करने की, तो वही चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होम्योपैथी डाइल्यूशन के अंदर उस बीमारी को हटाने के लिए। होम्योपैथिक लॉ कानून बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, व्हाट कैन कॉज कैन क्योर। तो पेट्रोलियम जो है इसका प्राइमरी सिम्टम ये होता है कि जिस्म को बहुत खुश कर लेती है, हाथ और पाँव पर वो बिल्कुल यानी कि वो जो खुश्की की वजह से वो हाथ पाँव कट जाते हैं। तो अगर किसी को इस तरह सिम्टम हो तो यही दवाई हम देते हैं उनको होम्योपैथिकली प्रिपेयर्ड करके, और इंशाल्लाह उनको इससे फ़ायदा बहुत होने का इम्कान है। पेट्रोलियम प्रिस्क्राइब फॉर डीप क्रैक्स एंड fissures. So anybody who has got psoriasis or even eczema and it predominantly affects the fingers or the feet and it causes cracks, then this remedy can really cure inshallah. Known as petroleum. And also with petroleum, this remedy, the skin picture gets worse in the winter as psoriasis does, and gets better in the summer. Moving on to sepia, another remedy which is very good for psoriasis that appears in the fold of the skin, under the arms, behind the knees, in the groin area. Again, worse in the cold, better for the heat. Very good remedy. And finally, something called Calcarea carbonica for people who are quite chilly, clammy, very cold to be with, very shy, they want to stay at home all the time, love milk, love cheese. They get easily tired and they crave sweets. This remedy, Calcarb, is the remedy for them. Again, a 30C, very easily taken. We're going to quickly move on to the, inshallah, fizzy drinks. And I just want to quickly explain to you how dangerous fizzy drinks are. People don't realize that they are extremely dangerous. In fact, if I can just pull this study up and go through it quickly, because we've only got roughly 7 minutes left. Fizzy drinks are extremely dangerous. Oh, here's what 1 can of soda a day for a month can do to the body. I mean, in fact, let's get to the point. Fizzy drinks can kill you. Fizzy drinks, them innocent, nice tasting, full of 39 grams of sugar cans, can kill you. In fact, let's talk about that. First of all, what it can do, it can increase your weight. Why? Because each can of sugar contains 39 grams. Each can of the fizzy drink contains 39 grams, whereas the Heart Association in America recommends no more than 25 grams a day. In 1 can, you're taking 39. La ilaha illallah. So in 1 year's time of drinking a soda a day, you get an extra 51,000 calories. That is 14 extra pounds, la ilaha illallah, of extra weight on you. And so the American Journal of Clinical Nutrition did a large-scale study that studied a population of over 50,000 nurses over 4 years. Guess what they found? The ladies who consumed this fizzy drink gained an average of 11 pounds more than the non-drinkers, because you're getting 39 grams of sugar, which is almost double what you should be having a day, and that's not to mention anything else you take. So this sugar, excess calories, just piles up as fat. Some people say that, we should have Diet Coke. That's better, but I mentioned before, the Diet Cokes contain the sweeteners, and them sweeteners make your body more primed to cause clots, which causes so much, cardiac issues. It can cause clots, etc. So whether it's diet, fizzy drink, or non-diet, it can cause metabolic syndrome. In fact,
the American Diabetic Association did a study that reported that having one or more fizzy drinks a day increased the risk of metabolic syndrome by 36%. Now, metabolic syndrome means hypertension, high blood pressure, diabetes, high cholesterol, and things of that nature. So, having one drink a day of the fizzy drinks increases the risk of metabolic syndrome by 36%. And they found that people who are, the risk of type 2 diabetes by people who drank one soda a day every day for 30 days, it went up by 67%. You were 67% more likely to get type 2 diabetes. And that's no surprise because it's full of sugar, 39 grams worth, to be honest with you. Extra sugars. And it doesn't stop there. It causes your brain to shrink, causes phenomenal, loss of your memory, causes inflammation of the joints. Anyway. So the risk of type 2 diabetes went up by 67%, and the guys who actually had the fizzy drinks, which were sugar-free, their risk of diabetes went up by 70%, more than the 67% for people who had normal fizzy drinks without the non-diet ones. And also, what fizzy drinks do, according to the American Journal of Public Health, drinking these drinks stimulates your appetite, so you want to eat more and more, and at the same time it kind of desensitizes you to the feeling of satiety, that you feel that you're not full up, or the feeling of being full up is delayed. So on one side it's making you eat more, and the second side it makes you feel a lot less full. So you're eating well over what you should be eating. Let's look at the effects of these fizzy drinks on your brain. The Journal of Alzheimer's and Dementia gave 4,000 people memory tests and brain scans, and they found that the more sugary fizzy drinks they drank, the worse they did on their memory tests. The brain scans revealed brain shrinking and brain shrinkage in those who drank one fizzy a day. One a day for 30 days caused their brains to shrink. This is in the Journal of Alzheimer's and Dementia. So if you're struggling with your memory, short and long term, it could be the fizzy drinks. Whatever it is, how much you remember of the show or not, remember this: them fizzy drinks are not your friends, and they could be the single biggest reason for your ill health, and there's no benefit. If there's benefit to them, I'd be putting a can here and drinking it in front of you in the show. There's no benefit. May Allah keep us safe. What else? Fizzy drinks age you. They make you go older. In fact, it says here, a study in the American Journal of Public Health linked drinking 20 ounces of sugar-sweetened fizzy drink a day to an additional 4.6 years of aging. If you drink a can a day, which contains an average of 20 ounces of sugar, that will age you 4.6 years. 4.6 years compared to a non-fizzy drink. And then your joints. Drinking fizzy drinks can make your joints feel like they're on fire. The American Journal of Clinical Nutrition found that women who drank one or more fizzy drink a day had 63% increased risk of developing rheumatoid arthritis, which is an inflammatory disease that causes your joints to swell up. 63% increase of developing rheumatoid arthritis. Just think of that. 63% risk. Your risk of getting rheumatoid arthritis increases by 63% if you drink a fizzy drink a day. So next time you go for a fizzy drink, just keep that in your mind. 63% increase of rheumatoid arthritis. Is it worth it? I'll let you be the judge of that. And then your organs. This fizzy drink can affect your organs as well. The Journal of Clinical Investigation found that visceral fat, the fat around your organs, increased in people who consumed high fructose drinks, which is what fizzy drinks contain. And this visceral fat, it secretes chemicals which make you insulin resistant, make you have high triglycerides, inflammation, type 2 diabetes. So dangerous, so dangerous. And then it also causes depression. There's so much studies I can go through with you. Let's just quickly do that in the last 46 seconds. People who drank fizzy drinks, in the study that followed 263,000 people for 10 years, the people who drank one fizzy drink a day were 30% more likely to develop depression versus people who didn't. So, in summary,
fizzy drinks are definitely bad for you. Go onto your YouTube, your Google, and do your own research. But you should aim to have zero drinks, Adil Bhai, or fizzy drinks. You should have zero. That's how bad they are. We'll continue next week, inshallah ta'ala. I hope you've enjoyed the show, inshallah. May Allah make it beneficial for yourself. And until next week, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.